I'm Casey. Welcome back to Accept Epilepsy. So yes, today again, as usual, I will be answering certain questions. I'm extremely sorry about the background noises. There is some construction work happening. तो हाँ जी, हम बीच बीच में गायब हो रहे हैं. कंटिन्यूअस वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं किसी काम में बिजी हो गई हूँ. सो क्षमस्व. और बैकग्राउंड नॉइज के लिए भी सॉरी. कुछ नहीं कर सकते, साउंड प्रूफ रूम नहीं है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. सो आज की वीडियो में अगेन मैं सवालों के जवाब देने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड मी by DM'd me or asked me by the viewers or people who do not follow me at all. And yeah, let's get on with it. So सबसे पहला सवाल स्पाइडर मामा ने पूछा है. गुड मॉर्निंग मैम, मुझे माइक्रोनिक जर्क्स हैं. मैं 1.5 years, आई थिंक 1.5 साल कहना चाहते हैं, 1.5 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था. जर्क्स और ट्विचेस फुल कंट्रोल में थे, पर जब मेडिसिन डिसकंटिन्यू हुई मेरे ट्विचेस फिर से शुरू हो गए. क्या मुझे मेडिसिन पूरी लाइफ लेनी पड़ेंगे? क्या आप मेडिसिन लेती हैं? स्पाइडर मामा, आपने खुद सवाल का जवाब दे दिया है. 1.5 साल तक आप लगातार बिना रुके मेडिसिन खा रहे थे, तब आपको माइक्रोनिक जर्क्स या सीजर्स नहीं आ रही थी. लेकिन जब आपने मेडिसिन डिसकंटिन्यू किए, आपको वापस शुरू हो गए. इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि जो हम दवाइयां खाते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब मज्जा तंतु जिसे मराठी में कहा जाता है, जिसे हिंदी में तंत्र प्रणाली कहा जाता है, उसे शांत करती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन एक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी शांत हो जाती है और हमें सीजर्स नहीं आती. तो इसलिए दवाई खाना इम्पोर्टेंट है. क्या लाइफ लॉन्ग आपको खानी पड़ेगी? उसके लिए आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जाके पूछिए, क्योंकि हमें पता नहीं है आपको कौन से टाइप की एपिलेप्सी है. हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें आपका डायग्नोसिस नहीं पता, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती. शायद आपके लिए दूसरा कोई ऑप्शन हो ना हो, मुझे पता नहीं. शायद देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट, आपके एपिलेप्टोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर सकते हैं. तो आप जरूर अपने डॉक्टर से ये सवाल पूछिए. क्या मैं मेडिसिन लेती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल. मैं जब 9 साल की थी तभी मेरा डायग्नोसिस हुआ था और तब से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ. और मेरी रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है, तो मुझे लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी. सो मैं ये तुरंत अंग्रेजी में बता दूं. सो स्पाइडर मामा asked me this question that he experiences myoclonic jerks and twitches, and he has been taking medicines for 1.5 years, but the moment he stopped taking his medicines, I mean, it wasn't controlled when he was taking the medicines, but the moment he stopped taking the medicines, the twitches and jerks came back. So he asked me whether he would have to take medicines for the entire span of his life and whether I take medicines or not. And well, he kind of answered his own question right there, that the moment he discontinued his medicines, the seizures, he started experiencing seizures again. That is exactly the point. You have to take your medicines. You cannot skip even a single dose, because the medicines that we intake are psychotropic in nature, which means that they calm your nervous system down
And because the nervous system calms down, our brain activity calms down as well, which means that, correct, the electrical circuit that our brain is kind of functions at a slow pace, which makes us not experience seizure that often. And regarding whether I take medicines or not, yes, I do. Whether that person, Spider Mama, has to take medicines in his entire life or not, well, whether I don't know his diagnosis, so I cannot comment on that. And I'm not a doctor, so I would suggest anyone out there watching this video that you should totally go to your doctor, your neurologist, your healthcare personnel, and ask them what are the options that you can opt for, because there are certain types of epilepsy which can be controlled. I mean, the seizures can be controlled with different types of treatments that you can find on the playlist called different treatments for epilepsy or something like that. I will add it in the description box below. I'll add the link of the playlist in the description box below so that you can go and check it out. And regarding me, well, I have to kind of take anti-seizure medicines till I die, because I have refractory epilepsy and the options given to me were not that great. So yeah, I have to take medicines till my body perishes. So the next question has been asked by Madhura Palande. I'm sorry for mispronouncing your name. I'm extremely sorry about that. Hi, it's really good that you are spreading awareness about epilepsy. Thank you so much. Thank you. So I just want to know that can a person with epilepsy live a normal life? Because my mom has epilepsy and she and me have been through a lot. Last year she had seizures 3 times, and one lady from our building told me that you shouldn't be getting married as your mom has epilepsy. So I just had a doubt. She is completely fine now. Okay, your one question has a lot of questions in them. So I'm going to address one point at a time, okay? So first and foremost, can a person with epilepsy live a normal life? What is normal? Everyone's normal is different. What is normal for a spider is not normal for a fly. So what is normal for a person with epilepsy is not normal for a person who doesn't have epilepsy. What is normal for a person with diabetes is not normal for a person who doesn't have diabetes. So I don't have diabetes. So if a person who has diabetes tells me what their normal is, I won't be able to relate to that. Correct? Because I don't have it. I can empathize. I won't sympathize because I don't like to sympathize with people. But I can totally empathize. I will try to empathize. But that is not normal for me. So everybody's normal is different. So do not think about this caricaturish concept called normal, because each and every person's normal is different. I am going to repeat this in Hindi and then start talking, like, take up another, broach another point that is there in your question. So हिंदी में फटाक से बोल दूं. मधुरा पलांडे ने पूछा है कि क्या जिनको एपिलेप्सी है क्या वो इंसान एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. तो हर एक का नॉर्मल काफी अलग अलग होता है.
और जो नॉर्मल एक छिपकली को लगे वो नॉर्मल एक कुत्ते को नहीं लग सकता, क्योंकि हर एक का नॉर्मल अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी अंग्रेजी में कहा कि जिनको डायबिटीज है उनका नॉर्मल अलग होता है। मुझे डायबिटीज नहीं है तो मैं उनका नॉर्मल नहीं समझ सकती, उनकी नॉर्मल लाइफ नहीं समझ सकती। और ना ही जिनको एपिलेप्सी नहीं है वो जिनको एपिलेप्सी है उनकी नॉर्मल लाइफ नहीं समझ सकते। हर एक का जो नॉर्मल का जो एक डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो अलग अलग होता है। तो ये जो कंपैरिजन करते हैं ना हम, कि चौधरी जी के लड़के को देखा है, चौहान जी के लड़के को देखा है, उसकी तरह सोचो, उसकी तरह मार्क्स कमाओ, ये जो होता है ना, शर्मा जी का बेटा देख लो, ये जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक का नॉर्मल अलग अलग है। आपका नॉर्मल अलग है, किसी और का नॉर्मल अलग है। हम लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं, हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो हम नहीं कंपैरिजन कर सकते कि जो आपने अपनी जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं वो कोई और ही वही एक्सपीरियंसेस करेगा, ऐसे तो नहीं होता, राइट? तो किसी और का नॉर्मल और आपका नॉर्मल सेम कैसे हो सकता है? तो ये कंपेयर करना छोड़ दीजिए। Stop comparing your normal with someone else's normal, because your life experiences are different. So don't compare. The moment you stop comparing everything, your normal becomes normal. Because there is no one normal. Everyone's normal is different. So the next topic, the next point was that your mother has epilepsy and she has had 3 seizures. You have been through a lot. Well, I can't comment on that because, well, as long as you survive, you're living, keep fighting. We all have to just keep fighting. And we have to stay strong no matter what. Wait a second. Yeah. I thought there was something in my hair, but it's just something on my screen. Sorry. Okay. So, yeah, keep fighting and stay strong. That's all that I can say. Because I don't know what you have been through. But, yeah. Just stay strong. Hang in there. Last year, she had seizures 3 times. Okay. Which is okay. I mean, she's on medicines, right? So that's fine. A lady from your building told you that you shouldn't get married because your mother has epilepsy. Okay. We really need to address this. We really need to talk about this. Okay. So, एक आंटी, बिल्डिंग की आंटी ने इनको कहा कि इन्होंने शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनके माँ को एपिलेप्सी है. Okay, let's address this. First and foremost, भले किसी को एपिलेप्सी हो या ना हो, आपको आपके माता पिता की उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है. तो भले उनको एपिलेप्सी हो या ना हो, आपको उनका ख्याल रखना ही है. So regardless whether your parents have epilepsy or not, you have to take care of your parents because that's your duty. And just because you have, regardless of whatever your parents' ailments are or any disorder that they have, you have to take care of your parents. So just because your mother has epilepsy doesn't mean that you shouldn't be getting married. Because even if you are married, even if your mother doesn't have any disorder, she is like the most, whatever, according to the society, the healthiest person that ever can be according to the societal norms, you still have to take care of her, regardless. So how does she having epilepsy change the dynamics? They don't.
एपिलेप्सी हो ना हो आपको ख्याल रखना ही है आपके माता पिता का, तो उनको एपिलेप्सी है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है। आप अब तक ख्याल रखते आ रहे हैं तो आपके शादी के बाद भी आपको उनका ख्याल रखना ही है, भले उनको एपिलेप्सी हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। और आपकी बिल्डिंग की आंटी क्या कहती है, यार उनको कोई टाइम पास है नहीं, वो जब ऐसे कुछ कहे तो उनको बोलना, आंटी जी जय सिया राम, कोई हॉबी ढूंढ लो, हमारी जिंदगी आपकी हॉबी ना बनाओ। Seriously, next time someone from your building tells you that, you shouldn't be getting married because your mother has epilepsy, you should be telling them stop reproducing, because the more people, the more genes of really narrow-minded people that you bring into this society are more harmful and discriminative than my mother having epilepsy. So like, why the hell did you get married and reproduce if she has? Because that's just discriminating. So yeah, I think that is what one should be asking these really hypocritical, discriminative people, that don't you think you should stop reproducing? I mean, why get such awful genes and questionable genes into this society? Having epilepsy is much better than these awful discriminative genes in the society. Answer back, girl, answer back. So yeah, that's about it. Go ahead, marry, but marry for the right reasons. Don't get married just because you want to get married. Marry for the right reasons. Marry if you're compatible with the person. Marry if the person is ready to accept you the way you are, accept your family, accept each and everything that comprises and that comes in your family. And that's it. Love comes and goes. It's an emotion, it's a phase. But when you have a partner who is ready to be with you through thick and thin, who you are ready to be with through their thick and thin, then marry. Don't marry for just getting married. That's it. शादी के वास्ते शादी ना कीजिए, शादी करेक्ट चीजों के लिए कीजिए। यदि आप कंपैटिबल हो, पार्टनर के तौर पे होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। कोई जगह वो आगे हो, आप पीछे हो, किसी जगह आप आगे हो, वो पीछे रहे, ऐसे पार्टनरशिप में चलनी चाहिए। वो शादी हो जो सालों साल टिके, ना कि वो शादी जो आप चला रहे हैं। तो शादी यदि करनी है तो करेक्ट रीजंस के लिए कीजिए। Marry for the right reasons and not just for getting married. A tick mark. Don't do that. आज का तीसरा और आखिरी सवाल यामिका उन्होंने पूछा है, Hi, I want to know how you got rid of epilepsy. My daughter is 9 years. She gets on daily basis. Okay. I was diagnosed with epilepsy at the age of 9 and I'm almost 36 now, and I've been taking medicines to try and control the frequency of my seizures. You cannot get rid of epilepsy because epilepsy is a disorder and not a disease. So if a person who doesn't have a hand, a limb, they cannot get rid of something, right? They cannot get rid of their handicap.
they don't have a limb, so they can't get rid of the fact that they don't have a limb. Epilepsy is something like that. You cannot get rid of it. You can seek treatments. And there are loads of treatments out there, and due to the technological leap that our society is taking on a daily basis, there are newer things coming into the society. New medicines are coming in. So yes, seek a good epileptologist, a good neurologist if you don't have an epileptologist in your vicinity, and they will suggest, they will diagnose, and they will suggest a good treatment for your daughter. You cannot get rid of epilepsy. The only way to get rid of epilepsy is when your body perishes. So yeah. तो यामिका जी ने ये सवाल पूछा है. उनकी बेटी 9 साल की है और बेटी को हर दिन सीजर्स आते हैं. तो एपिलेप्सी को कैसे अभी रिड ऑफ को हिंदी में क्या बोलूं, छुटकारा पा सकते हैं. एपिलेप्सी से कैसे वो छुटकारा पा सकती है, ये सवाल इन्होंने पूछा है. तो एपिलेप्सी एक तंत्र प्रणाली का विकार है. कोई रोग, व्याधि इत्यादि नहीं है, तो उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते. ट्रीटमेंट जरूर ले सकते हैं. एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके, न्यूरोलॉजिस्ट हो या एपिलेप्टोलॉजिस्ट हो, उनके पास जाके आप ट्रीटमेंट जरूर ले सकते हैं. ट्रीटमेंट काफी टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च इतना तेजी से बढ़ रहा है कि जो दवाइयां मैं 9 साल की थी तब खा रही थी और जो अभी आई है मार्केट में, उसमें भी काफी बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ईजी मतलब एक नॉर्मल ईजी करने का या एमआरआई करने का तरीका भी कितना अलग हो गया है. सो यस, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो टेंशन मत लीजिए. कुछ ना कुछ नया आता होगा, ट्रीटमेंट लीजिए. अब जैसे कि मैंने अंग्रेजी में कहा कि किसी को यदि कोई हैंडीकैप है, उनको हाथ नहीं है, तो अब उस फिजिकल विकार हो गया, राइट, बट विकार ही है जो दिखता है. अब हाथ नहीं है तो उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप छुटकारा नहीं पा सकते. अपने आप हाथ आने नहीं वाला. आप कुछ प्रोस्थेटिक हाथ लगवा सकते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे प्रोस्थेटिक आर्म लग सके, या फिर ऐसे कुछ हो सकता है. आपको सुनाई ना दे रहा हो, वो विकार है जो दिखता है, तो उसको कैसे ये कर सकते हो? छुटकारा तो नहीं पा सकते ना कि अचानक से बस छुटकारा मिल गया, मुझे सुनना है अभी, ऐसे तो नहीं हो सकता. हियरिंग एड्स लगाते हैं, राइट, कोई ट्रीटमेंट होती है उससे. वैसे ही एपिलेप्सी ये एक तंत्र प्रणाली का विकार है जो दिखता नहीं है. कोई विकार दिखते हैं, कोई विकार नहीं दिखते. एपिलेप्सी उसमें से एक विकार है जो नहीं दिखता, लेकिन वो विकार है, रोग नहीं है, डिजीज नहीं है. एपिलेप्सी इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ डिसऑर्डर. इट इज लाइक hearing impairment. If you cannot hear, the other person can see the fact that you cannot hear, but you can't get rid of the fact that you cannot hear. So what do? You take a treatment, the treatment being using hearing aids, right? There are loads of treatments for epilepsy as well. So you have to understand that epilepsy is not a disease, it is a disorder. It is an invisible disorder. And you have to, once that thing is clear in your head, once this concept is clear in your head, you will start realizing, and your perspective towards looking at epilepsy will change. Because doctors even till date keep calling epilepsy a disease, whereas it is not.
There's a difference between disease and disorder, and I have spoken about it at length loads and loads of times, but I'm just going to repeat it once again for you, Yamika, because I think you're new here, so I'll just repeat it for you. A disease is something which is triggered or which you experience due to some outer stimuli. A virus is something which is more or less like a parasite, and it spreads throughout your body. Again, it is an outer stimuli. Whereas a disorder is something that happens from within, that you cannot change. So you have to realize this. And yeah, I will डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है उसमें आप लिंक पाएंगे कि ट्रीटमेंट की अलग अलग जो भी आई थिंक मैंने 2020 में वो वीडियोस बनाए थे और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर एपिलेप्सी या ऐसे कुछ तो था. सो या टू चेक दैट आउट till whenever Thursday, because I'm extremely busy these days and I generally do not have the time to record a video, research for it, and shoot and upload and edit and blah 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 blah. There are so many things involved. Plus, thanks to my imprisonment, unlawful imprisonment, I have lost all the sponsors. So I'm a one-woman army who is researching, who is shooting, who is doing her own hair, makeup, own costumes. Well, the costumes were always mine, but still. Shooting on a mobile phone, editing on my laptop, everything doing on my own. Again, back to 2016. So yeah, the way I used to do that back then in 2016, I'm doing it again. So yeah, so one woman army, yay me! But I'm busy writing my book, so which hopefully will be launched at the end of this year or next year. I'm not sure about that, but we are still working out the nitty-gritties of it. And I hope you guys buy it. So till whenever, I'm not gonna say next Thursday because I'm not sure I would be making it that way. So till whenever, keep fighting, stay strong, and as always, stay healthy and stay golden. Mwah. Accept epilepsy.